States. I request all the attendees to take their positions, please. Ladies and gentlemen, may I have all your attention, please? Ladies and gentlemen, girls and boys, esteemed guests, it is with great pleasure and honor that I welcome you all to this much needed one-day national seminar on AI and in education, future of learning, organized by the Department of Computer Science, IT-AI-DS-AIML. Today marks a significant milestone in our collective journey towards engineering excellence. This seminar serves as a platform for the convergence of bright minds, innovative ideas, and boundless enthusiasm. As we gather here, we are not just representing our individual institution, rather, we stand as ambassadors of the engineering fraternity, united by a common passion for shaping the future through AI, technology, and ingenuity. Throughout the course of this event, we will have the opportunity to engage in stimulating discussions and exchange valuable insights. We will explore the diverse facets of AI field and chart a course towards a brighter, more sustainable future. We encourage each and every one of you to actively participate, collaborate, and seize the opportunities that this seminar presents. Let us harness the collective power of our intellect, creativity, and passion to address the challenges of today and lay the groundwork for tomorrow that is defined by progress, prosperity, and possibility. Once again, we, on behalf of H Raisoni College of Engineering and Management, extend a warm welcome to all our attendees. Together, let us embark on this journey of discovery, innovation, and transformation. We are extremely delighted to have amongst us the presence of respected Chief Guest Dr. Ram Chandra Pandurang Bhausar, Professor Computer Science, Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University. Dean Academics Dr. Sanjay Shekhawat, Head of Computer Science and Information Technology Dr. Sonal Patil, Dr. Nilesh Ingle, Professor Tushar Wagh, conveners of today's program, and heads and all the faculty members. We gather here today on the brink of yet another auspicious event in the journey of our college. We pause to honor a tradition that transcends time and culture, the lamp lighting ceremony. So I request all the dignitaries on the dais to please join us for this sacred ritual which symbolizes the illumination of knowledge, the kindling of wisdom, and seek blessings from Ma Saraswati. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। Thank you. Speaking about our college, Raisoni Group, a leading educational network in central India, boasts a rich history of nurturing future leaders across various disciplines. Established in the year 1998 with the foundation of H Raisoni College of Engineering in Nagpur, the group has grown steadily, encompassing 19 institutes and 4 universities, which are spread across 6 cities: Nagpur, Jalgaon, Pune, Amravati, Pandurna, and Bhandara. An innovative approach at every step towards success sets the RGI apart. We chose to provide practically oriented education combined with a strong academic focus developed specifically to meet industry needs. Very proud to share that we are the first autonomous institute in the region to follow NEP 2020 aligned curriculum, and also we are NAC and NBA accredited college. To grace this occasion, we are both honored and blessed to have amongst us the presence of Dr. Ram Bhavsar, Professor KBC NMU Jalgaon. Let me take the privilege to introduce such a dignified personality. Dr. Ramchandra comes with an enriching experience of 28 years. Talking about his qualifications, sir is an MCA with PhD Computer Science and Professor School of Computer Sciences, KBC NMU Jalgaon. Sir comes with an enriching experience of 28 plus years. Sir's area of expertise and interest includes natural language processing, machine translation, computational linguistics with special reference to Hindi, Marathi, and English, generative AI teaching tools, capacity building, assistive technology for persons with disabilities, machine learning, technical writing, content writing, so on and so forth. For research publications, Sir has 30 plus international journals, 70 plus conference papers, 50 plus invited talks. 3 students have completed their PhD under Sir's guidance, and 2 students have submitted the thesis while 2 are still working on it. Under special mention, let me place on record the work that Sir has conducted. He has worked on practically working mantra MT system at Applied AI Group, CDAC Pune, on Anu, Anuvadaksh, English to Indian languages MT, Project Consortia project by TDIL, MOCIT, New Delhi, developed Hinmat, Hindi to Marathi, machine translation system as part of his PhD research work. Special interest in NL parsing, theoretical computational linguistics, grammar formalisms, Hindi, Marathi grammar. 4 of his students got best paper awards in international conferences. Sir has handled various responsibilities in various capacities. Sir has been the head of Department of Information Technology, School of Computer Sciences. He is an European Union certified trainer at University Capacity Building Center, CBC. Sir has visited Technical University at of Košice, 2K, Slovakia under EVP of CAPSIN project. Sir has trained 3,000 plus teachers in the subject e-learning during COVID-19 pandemic. Sir has been the member of Board of Studies at various universities and institutions, including KBC NMU. Under his expertise, Sir is an expert in IT infrastructure setup on the university campus area network, university website, online admission system, designing IT training programs for teaching staff as well as non-teaching staff of the colleges and university, IT related consultancy to academic institutions. Sir has been a resource person to numerous FDPs, orientation programs, refresher programs, so on and so forth. May we request to welcome such a distinguished personality? May we request Dr. Sanjay Shekhawat, our Dean Academics, to please welcome Sir with a bouquet and a memento as a token of our love and appreciation.
Thank you, sir. May we now call upon the convener, Professor Tushar Wagh, for his preface. Thank you, Taekwondo ma'am. Good morning, esteemed guests, respected dignitaries, faculty members, and dear students. It is an absolute honor to welcome you all to this National One Day Seminar on Artificial Intelligence, organized in alignment with AICT Declaration of 2025 as the Year of AI. This initiative marks significant step in shaping India future as global leader in AI driven innovation and education. We are privileged to have with us distinguished panel of experts who have graciously joined us today to share their insight. Our chief speaker, Dr. Ram Hauser sir, a visionary in AI and technology. Dr. Pranit Saurabh, Dr. Charudat Pathak, Dr. Minakshi Chawla, esteemed scholar in their fields. Our dynamic director, Dr. Priti Agarwal ma'am, whose leadership guides our institution towards academic excellence, Academic Dean Dr. Sanjay Shekhawat sir, HOD CSIT Dr. Sonapati ma'am, HOD AIML Dr. Swati Patil ma'am, and our dedicated coordinators Dr. Nilesh Ingle, whose efforts have been instrumental in making this event possible. A special word of gratitude to our chairman Sunilji Raisoni sir and executive director Shrejji Raisoni sir for their unwavering support in fostering an environment of learning and innovation. Artificial intelligence is a revolutionary every aspect of our lives, from education to industry. As we embark on this journey today, let us embrace the power of AI not just as a tool, but as a responsibility to innovate ethically, learn continuously, and drive meaningful change in our society. I once again extend warm welcome to, to all of you. Let's make this seminar memorable and impactful one. Thank you. I want to share something. We have shared a YouTube link of live streaming of this program. Please use it. Thank you. Thank you, Professor Tushar Wagh. It's now time to hear from our Dean Academics, Dr. Sanjay Shekhawat sir, for his welcome address. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आवाज फार कमी येतोय. परत एकदा गुड मॉर्निंग. Respected chief guest of today's one day national seminar on AI for education and future of learning. We all are very fortunate that Professor Dr. Ram Bhavsar is the chief guest for this today's inaugural function of this national seminar. Dr. Ram Bhavsar is a professor at Computer Science Department of our esteemed university, and he is very active during the COVID pandemic period, because what happens as the lockdown is post, and during that lockdown the teaching is almost stopped in all affiliated colleges and university departments. So to shift from the physical teaching mode to the online teaching mode, it is very necessary that to give the training to the teachers how to impart the lectures in online mode, and that capacity building program, that teachers training programs, that all are conducted by the university, and Dr. Ram Bhavsar is very played a very crucial vital role to train the teachers of all these three Dhulia, Jalgaon and Nandurbar district colleges and their teachers. So we are very thankful to him,
for giving that particular trainings for online education. The convener of this national seminar, Dr. Nilesh Ingde sir, my colleague Tushar Wagh sir, head of department of this computer science and IT department, Dr. Sonal Patil madam, all other head of departments present here, and all faculty members and the students. This national seminar is the part of institutional AI plan because AICT has announced this year as the year of AI and the slogan with AI for all. So as a part of AI year announced by AICT and the institute as the AI 2025, this seminar is organized. आज सकाळी जर तुम्ही 2 बातम्या वाचल्या असतील सकाळी लोकमत पेपरला, तर त्याच्यात एक आर्टिकल आलंय. एक आर्टिकल असं आहे, न्यूयॉर्क टू नंदुरबार अशा नावाचं एक आर्टिकल आहे. न्यूयॉर्क टू नंदुरबार. एक खानदेशातला युवक अमेरिकेमध्ये राहतो, एक 15-20 वर्षापासून अमेरिकेमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करतो आणि तो भारतात पण त्याच्या गावी आलेला आहे आणि त्याने नंदुरबार, जळगाव हा जो सगळा मोलगी वगैरे आपला एरिया आहे तिथे तो फिरतो आणि तिथलं जे प्रवास वर्णन त्यांनी केलेलं आहे ते जे आज हुकमतला, त्याच्यात त्यांनी सांगितलंय की शिरपूर पासून आपण बोराळी नावाचं एक गाव आहे तिकडे जातो आणि त्या बोराळी नंतर लगेच सातपुडा सुरू होतो. तिथे एक फार्मसी कॉलेज पण आहे त्या बोराळीला आणि त्याच्या पुढे अजून एक गाव आहे तिथे एक अंगणवाडी आहे आणि त्या अंगणवाडीमध्ये तो जो काही आदिवासी एरिया आहे नंदुरबारचा आणि जी काही पहाडी एरिया आहे तर तिथले एक त्यांनी सांगितलंय की तिथे एक आश्रमशाळा आहे, अंगणवाडी आहे. त्या अंगणवाडीमध्ये काय करतात ते वर तर सोलर लावलेलं आहे पण त्या सोलरच्या सुद्धा एक बकेट पण लावलेली आहे. ती बकेट खाली घेतात, जसं आपण अपार्टमेंट्स मध्ये बघतो कचरा टाकायला वगैरे करतो तशी तिथे एक बकेट ठेवली आहे. त्या बकेटमध्ये एक मोबाईल ठेवतात आणि ती बकेट मग वर ओढतात. मग तो मोबाईल असा वर गेला की मग त्याच्यात रेंज येते. रेंज आली की मग ते हॉटस्पॉट घेऊन त्यांचा कम्प्युटर चालवतात आणि अंगणवाडीमध्ये मग युट्यूबवर पोरांना बरंच काही शिकवतात. यातला निष्कर्ष काय, यातला तात्पर्य काय की अजून पण तुम्हाला जे नवीन इंजिनियर्स आता होत आहे, जे इंजिनिअरिंग करताय, स्पेशली जे कम्प्युटर BCA MCA आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या ब्रांचेसमध्ये आहेत, तुम्हाला अजून भरपूर स्कोप आहे. कारण की ही AI ची जी चळवळ सुरू झाली ही हार्डवेअर शिवाय किंवा त्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर शिवाय त्या गावापर्यंत पोहोचणार नाही. तर ती पोहोचण्याची जबाबदारी आज आपल्यावर आहे. दुसरी त्याच लोकमतमध्ये अजून एक बातमी आली. आज काय बातमी आली आहे? काल सगळ्यांना माहित आहे काल काय होतं, व्हॅलेंटाईन डे. तर त्या व्हॅलेंटाईन डेला तसं फार महत्व आहे. बरेच लोक असं बरेच मुलं मुली ठरवतात की लग्न व्हॅलेंटाईन डेला झालं तर दरवर्षी मस्त साजरं करता येईल. तर असंच एका मुलीने ठरवलं की आपण व्हॅलेंटाईन डेला कोर्ट मॅरेज करूया. ही शहरातली गोष्ट आहे, धुळे शहरातली. त्यांनी ठरवलं, त्यांनी 1 महिन्यापासून सगळी नोटीस वगैरे दिली, सगळंच गेलं. व्हॅलेंटाईन डेला ते तिथं गेले, हार फुलं, आई वडील सगळे संमतीने लग्न होतं. आई वडील सगळं फुलं वगैरे हार सगळे घेऊन गेले. 1-1.5 तास ते सर्व्हरच चाललं नाही, ते हारच कोमेजून गेले. ही पण बातमी आज लोकमतला आलेली आहे. याचाच अर्थ काय की वी हॅव अ स्कोप. प्रॉब्लेम्स इज दी म्हणतात ना, त्या प्रॉब्लेम जर आहेत तरच त्याचं सोल्युशन निघणार. आणि हे प्रॉब्लेम्स आहेत, आपल्या देशामध्ये आहेत आणि आपल्या समाजाला. वी हॅव टू ग्रो our society, then only the technological interventions can solve our problems, and therefore you have that opportunity to this young generation to provide these facilities up to the last people of this country. And therefore to shoulder this responsibility you must be a very vigilant and make all efforts
to gain this opportunity, to grab this opportunity. And therefore, this AI, these technological interventions are very important. And this is the aim of this seminar, to aware you about the what is happening in the world of artificial intelligence and how this artificial intelligence is influenced to our education system also. This this AI is very helpful to solve the meaningful problems in education. There are problems, yes, and there may be always the problems kahin na kahin rahnar hai. And to solve these problems, how we use these AI tools and solve the problems, that is the responsibility of the teachers, and therefore it is very necessary that the teacher should also to be trained, and there this training will give you a potential benefits of this AI to use it in your teaching learning process. जसा माणूस चुका करतो तसं एआय पण चुका करतो, बरोबर. आपण काय करतोय, एआय करतोय म्हणजे ह्युमन इंटेलिजन्स विल बी रिप्लेस बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. दॅट इज अ व्हेरी लॉंग जर्नी, but still we are trying to do that and achieve that strong AI where the human intelligence is replaced by the artificial intelligence. But as same as the human being can take done a mistake, AI also. त्याच्यामुळे तुम्ही पुष्कळदा एआय वरनं इन्फॉर्मेशन घेता, चॅट जीपीटी वरनं इन्फॉर्मेशन घेता, त्याच्यात काहीतरी रॉंग पण असतं, चुकीचं पण असतं. Many teachers use AI to write the research papers and they download the references. Many times that references are not exist in actual. चुकीचे पण असतात, आपण व्हेरीफाय करत नाहीत. So therefore, to help the teachers to teach in a better way, this AI is very essential, AI is very useful. Similarly, for students to achieve their learning objectives, AI is definitely help. So therefore, along with AI, artificial intelligence, human intelligence is also required. And therefore, hybrid intelligence system will definitely give a better results compared to the artificial intelligence. Therefore, from ancient intelligence to now, we comes in the era of artificial intelligence, but we should be very vigilant to to adopt this artificial intelligence, use our human intelligence and move with the hybrid intelligence to get to excel in our career, to excel in your profession. So definitely this insights of the artificial intelligence, but there are 4 different resource persons are available throughout the day, and I am very confident that this AI seminar will help you to boost your career. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sanjay Shekhawat, sir, for those insightful words. Sir has very beautifully already set the tone for today's seminar. So let's not take more time, and without much ado, let us welcome our chief guest. Sir's topic would be on future of learning in AI era. So let us once again welcome Dr. Ram Bausar, sir. Over to you, sir. Hello. Hello. Mic testing check. Hello. Am I audible till the last row? Because you are the lords of the last benches. Okay. So, thanks a lot, the college, my old affiliate friend, Professor Sanjay Shekhawatji, and your director, Priti Agrawal ma'am. Okay. So it's always a pleasure to come to your college and talk with the students. Okay. So without further delay, let me kickstart with my talk. Okay. So the talk which I have planned today, I'll try to tell you about what is the future of learning in AI era. Okay. See, we cannot sleep until unless we don't know new jargons every day. Okay. So that way now
The previous era, they used to say it's a e-commerce era, and then this era, computerization era, 1990s. Okay, and now we say we have already entered into an AI era. Okay, so what this thing is all about. Okay, before I start, this is a simple question. Okay, why do we need artificial things? Because when we lack natural things. So is it a case with intelligence that we lack natural intelligence, that's why we need artificial intelligence? No, this is an exception. Okay, so what is the exception? Because we made machines. Just concentrate on three things. Okay, datum, data, information, knowledge, and intelligence. Okay, the entire ball game, moves around all these four things. What is a datum? Datum is a singular form of the word data. Okay, since I am a bit educated in linguistics, so I try to look at the languages from a different perspective, from a computational perspective. Okay, so singular form of data is datum. Then it's a collection of facts makes a data. If I process it, I'll get something meaning out of it, that is an information. And if I synthesize that information, I get knowledge. Okay, see, you teach students for 60 minutes, right? You teach for 60 minutes. But what is the gist of that class? Hardly 5 minutes or 10 minutes. So what is it? You are elaborating to the level they can understand. Okay, we will never take medicines, in a raw form. We add water, we add milk. Why? Similarly, a teacher cannot just tell the things in 5 minutes, because you need to understand, you need to be trained on that part in that way. So that's a knowledge. Then the most important question is, what is intelligence? Okay, so intelligence is nothing but it is your ability to apply the knowledge. I may have knowledge, but I don't have intelligence to apply it at right point, right moment. Okay, so if we were knowing that it's going to be a COVID and it's going to be all lockout and lockdowns, how can we still continue our functionings in our businesses, in our day-to-day lives, in our education? Okay, so we should know, I know the technology, how can I use it? So the person who is having that ability to apply the knowledge, whatever he or she has, okay, will make you successful. And we say that this is a knowledge-based economy. This present era or the 21st century, we say it's a knowledge-based economy. So everybody is trying to get as much as knowledge as possible. So with this little preamble, okay, so I'll just tell you, because my approach always has been to trace the roots of any concept. Then only we can better understand. Okay, is it a case that without AI the world was not functioning? It was. Do you think we are the most intelligent breed on the earth? No. Our ancestors, forefathers and forefathers, okay, they were also equally intelligent. Then what has changed? Or how we can take the advantage of new things? Because we have normally two kind of people in the world. One who are always baggy types. Okay, they want to revolt, they want to revolutionize the things, and the rest of the 50%, yes sir, surrender. Okay, so this is generally the broad classification of mindsets of people in the world. Okay, so we have to understand the learning in its pure form. So what every human being needs to, when you say I want to learn things, so what I mean is I have to understand the things. It can be both formal and informal in nature, whatever I want to take. फॉर्मल एजुकेशन हम किसे बोलते हैं ना, जो पढ़ने के बाद वी गेट सम सर्टिफिकेट और अ डिग्री और समथिंग. ओके, इसका मतलब हर पढ़ाई के लिए हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है ऐसा नहीं है. ओके, सो यू हैव फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशंस. And what is it that you need? You need a goal, you need a task or a content to learn something, and then you need somebody to administer this process of learning. So to say, learner
then it can be yourself or can be a facilitator, and then you will learn it from that particular mentor or a teacher. Okay, in non-formal we try to copy someone and try to get some knowledge. Okay, and in informal setup, in informal setup we do learn, but the mentor is not present, and we get the degrees or certifications for that. So open universities are the best example of informal education. Then, okay, this is a very important thing you have to understand. Okay, process of learning. Okay, so and why we learn? Because we want to develop some kind of competence. What are competences? Competence is nothing but a kind of skill. किसी विषय के बारे में हमको और चीज जान के हम यदि उसके बारे में कुछ अप्लाई करने की क्षमता डेवलप कर सकते, विकसित कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हमने इस स्किल को, इस निपुण को हमने हासिल कर लिया है. ओके, सो यू हैव अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस. वर्ल्ड इज फुल ऑफ नॉलेज, देयर आर मेनी थिंग्स विच आई डोंट नो. ओके, और मुझे डोंट नो है तो भी मेरा कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. That kind of a situation. Then conscious incompetence. Okay, कि मुझे पता है, know what you don't know. मुझे पता है कि ये चीज मुझे पता नहीं है. ओके, अभी मेरा लाइफ जीने का एक सिंपल प्रिंसिपल है, आई नो व्हाट आई डोंट नो. जिस दिन ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि यू नो व्हाट यू डोंट नो, आपके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं ना, वी ट्राई टू क्लेम आवर अथॉरिटी ऑन द थिंग्स विच वी डोंट नो, एंड अल्टीमेटली हम तो फंसेंगे उसके अंदर. ओके, व्हाट अ टीचिंग डज इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस डेवलप करती है. ओके, सो यू नो व्हाट यू नो, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. फाइन. देन last one is unconscious competence. If I ask a question in the class, many students know the answer, but they hesitate to answer. उसको लगता है यार ये जो मैं बताऊंगा वो गलत होगा, तो लड़कियां मुझ पे हंसेगी, लड़के हंसेंगे, they will troll me in the modern context. तो यदि ऐसा हो रहा है तो हम लोग बोलते नहीं, बिकॉज आई फील जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो सेकेंडरी है. Okay, but I have that competence with me. Okay, so these are the 4 things which you have to learn before you start doing your learning. Okay, then what is a non-formal kind of setup for learning? So all of us have learned to ride a bicycle. Okay, उसके लिए कोई डिग्री नहीं मिला आपको, जख्म ही मिले पहली बार जब गिरे. उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती है. We had a early system in which the entire village used to plan or meet its own requirements. इथे गावामध्येच त्या ठिकाणी 12 बलुतेदार पद्धती होती. तर तो जो 12 बलुतेदार पद्धती होती, जर समजा कोणी पांचाळ असेल तर तो पांचाळाचा मुलगा त्याच्याबरोबर बसून बसून तो शिकायचा, त्याला कुठलं काही त्याने सर्टिफिकेशन किंवा डिग्री असं काही दिलं नाही. Isn't it? Still he learned. Then second form of a non-formal education is कि जब आप किसी महात्मा के प्रवचन को बैठोगे तो सुनाते रहता है, ज्ञान देता रहता है, और आप उसको लेते रहते हो विदाउट, बहुत कॉन्शियसली आप और चीज नहीं करते हो, बट स्टिल आप पढ़ते रहते हो. ओके, सो दैट्स अ नॉन फॉर्मल सेट ऑफ एजुकेशन. सो और एजुकेशन की हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसमें पहले यही था कि एजुकेशन एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम रिलीजन्स. सो द रिलीजियस लीडर्स या प्रीस्ट्स दे यूज्ड टू एजुकेट पीपल, बट देन सो दैट टाइम the view or the perspective of education was to look everything from the religious goggle. Okay, then came the secularization in education, जिसको हम बोलते हैं विज्ञानवादी एक दृष्टिकोण डेवलप हुआ, और
फिर वो जब हुआ उसके बाद में वी गेट इनटू व्हाट वी कॉल एज द public education. Okay, you may be knowing we had the earliest universities in the world in the form of Takshashila, Nalanda and all that. Okay, but they were not the pure form of today what we call as a public education. Even Socrates, Aristotle, these people have their own academies in AD 5 and 6, but they were the private academies. So जिसके पास पैसा रहता था वो जाता था. But later on we introduced this concept of public education or people education. Some people have object on the term public, so it's a people education. So nowadays it has become a right. In early era it was not a right, education was not a right for everyone, but nowadays it has become a right. There is a law called as right to education, and all these things got actually structured in 19th century. Okay, then ओके फॉर्मल सेटअप जिसमें आप लोग बैठे हैं, हम भी उसी में, हमारा ब्रेड बटर वी अर्न. फॉर्मल सेटअप तो हमारे पास क्या होता है, somebody gives us a content, बॉस तुझे पढ़ना है, then they will have a teacher or a mentor. वो क्या करेंगे, there is what is called as world knowledge, there is what is called as world knowledge. फिर वो वर्ल्ड नॉलेज में से वो कंटेंट क्या है, the mentor himself or herself will try to understand. Okay, after understanding that he or she will make an instructional design. What is instructional design? अभी स्लाइड पे बहुत कुछ लिखा है, but भी I am trying to speak things which are not on the slides. यदि मैं line to line पढ़ने लगूं तो वो क्लास में कोई नहीं बैठेगा. So you have to develop a mechanism how to present your content. Okay, that is what is called as instructional design. Then the next part is the content delivery. So how the teacher is delivering the content, in what form, what way, okay, is an important part. See, do mind these terms: instructional design, content delivery, and finally then it reaches to the learner and we say he has learned. He has learned something. Okay, so that's the way this process actually goes. Okay, but putting it in the other way, after content delivery, okay, we need a benchmark to tell you whether you have really learned a topic or not, and that is where the evaluation comes into picture, and that has become the nightmare in Indian education system. Every student first day itself will ask, sir हे येणार आहे का परीक्षेत? फार लहानपणापासूनच आपण IMPs and VVIMPs बनून जातो. ओके, त्याच्यामध्ये काय होतं ना, आपण विद्यार्थी न राहता आपण वी बिकम परीक्षार्थीस. ओके, and that is why, okay, I have a friend, Professor Martin from Belgium University. He is amongst the first 5 people who drive the world's education systems. So he was here in the university for our European Union project, and we were sitting for a dinner. He asked me a very simple question. He said, Ram, tell me one thing. Your country produces highest number of engineers in the entire world, but why still you don't have many innovations on your name? Okay, then I have a sorry face to make. Okay, I said, see boss, our intention of learning engineering is different. Yours is different. So टॉपिक वही पढ़ना है, बट आप किस इंटेंशन से पढ़ते हो, दूसरा कौन सा बच्चा किस इंटेंशन से पढ़ता है, ये चीजें मैटर करती है दुनिया में. ओके, सो यू हैव बेंचमार्क लेवल्स. Somebody is poor, somebody is fair, good. Okay, so there are different kinds of scenarios we can talk of. Okay, in the formal classroom setup, it's all one way, duck 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 duck. बच्चा सुन रहा है, उसको बैठना है. Okay, there is lack of interactivity, no interactivity as well. But is it the case for all kind of education, formal education? No. For few subjects that may be okay, but for arts and all that, their teachers are not teachers, they are demonstrators. Okay,
Then you need delegators, especially if you have group activities in MBAs, ग्रुप डिस्कशन है ना, केस स्टडीज है, तो उसमें आपको डेलीगेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि भाई तुम ये करो, आई विल ओनली मॉनिटर यू. देन फैसिलिटेटर्स, मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. जब प्रैक्टिकल होता है लैब में, कंप्यूटर का हो या केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, तो वो टीचर का रोल क्या आता है वहां पे, इज एन फैसिलिटेटर. जस्ट टू जस्ट टेल देम कि अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, ऐसा करो एंड ऑल दैट. ओके, सो दैट टाइम ही इज नॉट इनटू दैट अथॉरिटी मोड, मैं बोलूंगा वही ब्रह्म वाक्य होगा. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीथिंग वी हैव फाउंड अ वंडरफुल टर्म हाइब्रिड. कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो हाइब्रिड है. So that's how it does. So what are the problems? So somebody has studied these problems and said that what we are mostly doing is a knowledge transfer through passive mode to the student without caring for how much he or she understands. So जो आप लेक्चर देते हो उसका रिटेंशन जो बच्चों का होता है, okay, of course it's a very general statement, not to a particular class and all that. Only 5% बच्चे रिटेन कर पाते हैं जो क्लास में आप पढ़ाते हो. ओके, डेमोन्स्ट्रेट करके बताओगे, ऑडियो विजुअल्स के साथ बताओगे, तो वो रिटेंशन रेट इन देयर माइंड इंक्रीजेस. ओके, एंड इट इज इन द बेस्ट ऑफ इट व्हेन यू टीच अदर्स. ओके, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर आल्सो सिटिंग हियर. या जो बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे सेमिनार देते हैं यहाँ पे जो बैठे हैं उनमें से, प्लीज रेज योर हैंड इफ समबडी हैज डिलीवर्ड अ सेमिनार एवर इन योर क्लासरूम और इन योर जूनियर क्लासेस. ओके, गुड. सो व्हाट इज द एक्सपीरियंस? व्हेन यू टीच समवन देन ओनली यू अंडरस्टैंड, बिकॉज टू टेल समथिंग टू समवन आई शुड बी 200% sure that I know this. Then only I can tell you that boss, this is what is the thing. Okay? Because वो synthesis process होती है. 1 घंटे के लेक्चर के प्रिपरेशन के लिए जो नए लोग होंगे उनको कितने घंटे लगते हैं? 3 to 4 hours, right? So this process is that what I was telling you. Okay? जैसे 1 लीटर दूध से कितना घी बनता है? 1 लीटर बनता है क्या? 100 grams. So it is the same thing. जो आप पढ़ाते हो उसमें से बच्चा कितना घर पे लेके जाता है? 5%. Okay? So it is the process of synthesizing information, data into knowledge. फिर वो बच्चा जो पढ़ के जाएगा आपके कॉलेज में से, फिर बाहर जाने के बाद जब वो आता है दुनिया में, फिर वो उसमें से कितना नॉलेज अप्लाई कर पाएगा, दैट इज व्हाट इज हिज और हर इंटेलिजेंस. ओके, आइंस्टाइन ने बड़ा एक खूबसूरत कोट बोला है. व्हाट आइंस्टाइन सेड वाज, व्हाट इज नॉलेज? सो ही हैज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. ही सेड व्हाटएवर इज लेफ्ट इन योर ब्रेन आफ्टर गिविंग अप द फॉर्मल एजुकेशन, जितना बच गया वही नॉलेज आपको मिला है. ओके, सो इट इज दैट थिंग. देन इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मल सेटअप्स वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड करिकुला फॉर ऑल द कोर्सेस. असेसमेंट्स आर ऑफन समेटिव. आपको नंबर दिए जाएंगे कि भाई आपको इतने आए, आपको उतने मिले एंड ऑल दैट. ओके, सो व्हाट आर द बॉटलनेक्स in this system? The very big problem nowadays, wherever I go for talks, I talk to the teachers, they say, sir, आजकल बच्चे क्लास में नहीं आते. अभी बच्चे क्लास में क्यों नहीं आते? So it's not on their part, it's more on our part. That's what I feel. Because you need to change the way we teach, or the way we. So the teachers now should become preachers. That is what I say. Okay, in IT industry, they don't call trainers, they call preachers. Okay, the senior trainers, they call them as preachers because they will have to preach. Okay, preach म्हणजे प्रवचन,
टीच म्हणजे व्याख्यान. Okay, so there is a subtle difference, of course, linguistically. So personalization, there is no personalization. वो जैसे पढ़ा रहे टीचर वैसे मुझे पढ़ना है. उसके बाद में फीडबैक. Feedback is something we take only whenever the NBA will ask for it, NAC will ask for it. पूरा साल होने के बाद, सेमेस्टर होने के बाद एक काम करो, वो बच्चों को है ना मार्कशीट देने के पहले उनसे फीडबैक भरवा लो. I mean, we also do the same. हम भी वही करते हैं क्योंकि हमें वो आदत ही नहीं है. So we need to improve on these parts also. Okay, otherwise we'll be left nowhere. Okay, now फिर ये इस तरह से चलता रहा. फिर एजुकेशन में हमने बोला नहीं अभी टेक्नोलॉजी आया, अभी कुछ तो भी गिराएंगे, विल डू समथिंग न्यू. ओके, सो न्यू क्या करेंगे? टीचिंग में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है. वन इज योर कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड थर्ड इज योर डिलीवरी मैकेनिज्म्स. दीज आर द ओनली थ्री थिंग्स. मतलब जब से सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड एंड एजुकेशन, दीज आर द ओनली थ्री थिंग्स. इसमें चौथा कोई पैरामीटर आया ही नहीं आज तक और आएगा भी नहीं. ओके, सो व्हाट हैज हैपेंड? जो आपका वर्ल्ड नॉलेज जिसको आप कहते हो, its forms have changed. Okay, so in our early traditions, Gurukul system, when it was there in India, okay, how the knowledge was transferred from one generation to another? It was all through oral transmissions. Okay, so they used to make you memorize the things, जिसको हम rote learning बोलते हैं, रट्टा मारो. Okay, so that was the only way because there was no other way. How can I store the knowledge so that somebody can refer it to later on? Okay, then we started transcribing it on tree leaves. After that, China invented paper somewhere after the in AD 105. So उसके बाद में थोड़ा कुछ चीज स्टैंडर्डाइज होना शुरू हुआ. लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट कितनी कॉपीज में लिखेंगे ना, what you can say is the milestone in this entire journey is the invention of printing press. When the printing presses came into existence, then we started printing n number of copies and all that. Later on, you got digital medias, okay, and you started storing knowledge, what we call as a world knowledge out there. But what is a new thing for which we are, all of us are here, is what is called as LLM, large language models. So internet had so much of trillions of zettabytes of data. What to do with that? So somebody said, no, we'll try to learn from that data. We'll try to learn. And on the delivery mechanism part, okay, there were times when telephones were also used for content delivery, personalized tutoring. Okay, radio. Still, you have some FM channels running educational programs. Colleges, some of the colleges also run. Okay, then TV programs. EMRC Hyderabad, 12 बजे आता था DD National पे. Okay, उसके बाद में आया आपका इंटरनेट, and that really revolutionized everything. That revolutionized everything, and the term e-learning was introduced by Leot Massey in one of the conferences somewhere in 1999. Then there came the next thing, what we call as online education. फिर इसमें बहुत लोगों ने जंबल किया, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ओके, somebody said, वो जो तुम कल जा रहे हो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? मैंने बोला वो रियल टाइम है. ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, लोग इसमें बहुत मेसअप करते हैं. एनी डेटा विच इज अवेलेबल ऑन सम इंटरनेट सर्वर इज ऑलवेज ऑनलाइन. Whether you are accessing it at the real time, then it will be called as online. Otherwise, it is available. आज की क्लास का वीडियो यदि बना के डाल दिया, मैं शाम को देखता हूं तो मैं उसको ऑफलाइन मोड में देख रहा हूं, बट इट इज देयर.
and whatever is happening out here is a real time. Okay, so it really gave a boost, and additional flavors got added into your instructional and designs and delivery mechanism, and that was the multimedia. That was the multimedia, because you don't like sitting and just a person is speaking out for you. You want to see some video in between. You want to listen to a audio in between. So if we do it like this in our classes, some examples, then it would be a more engaging class, and then only the students will love to attend the classes. Okay. So these are the evolutions, how it happened. Instructional designs, how they got modified. Okay. But this e-learning thing introduced a major paradigm shift in the way we look at education, and that is so many ways of teaching were invented. So flip classroom, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग. देखो पीयर ट्यूटरिंग, थोड़ी देर पहले मैंने किसी को पूछा कि आपने कभी सेमिनार में पढ़ाया है क्या. क्यों पूछा? क्योंकि उसमें उसके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हुए. दूसरा चीज, आजकल दुनिया में इसका बहुत जोर है, पीयर ट्यूटरिंग और फ्लिप क्लासरूम. फ्लिप क्लासरूम क्या होता है? हमारा क्या होता है कि टीचर आएंगे, टीचर पढ़ाएंगे, anybody has a question, everybody will look down, class is over. Okay, क्योंकि स्टूडेंट को भी पता नहीं पूछना क्या है ना, एंड टीचर फील्स वाह मैंने क्या पढ़ाया. डाउट्स आर कमिंग मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग, ऐसा मेरा प्रिंसिपल है. डाउट्स आर नॉट कमिंग मीन्स इधर यू हैव गॉट एवरीथिंग और यू हैव नॉट गॉट एनीथिंग, एज सिंपल एज दैट. ओके, सो फ्लिप क्लासरूम में क्या होता है कि कल क्या पढ़ना है वो आप आपके वेब सर्वर पे रखोगे, गूगल क्लासरूम में रखोगे, बच्चों को बोलोगे कि भाई ये कल पढ़ के आना है, और मैं किसी को भी खड़ा करूंगा. Until unless there is no hanging sword, no, nobody works. फिर सेकंड डे आपको क्या करना है एज अ टीचर कि भाई आपने को ये टॉपिक पढ़ना था, दीज आर द सब पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स इन दिस. चलो भाई तुम खड़े हो जाओ और बताओ आपको क्या समझ में आया. आइदर यू आस्क मी और आई विल आस्क यू. इफ इट गोज इन दैट वे देन वी से दैट वी आर ऑपरेटिंग इन अ फ्लिप क्लासरूम फैशन. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर पीयर ट्यूटरिंग क्या है? पीयर ट्यूटरिंग क्या है कि हमको पता है, ये बच्चों के लिए है, कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई क्लास की, तो आप किसको पूछते हो? टीचर को पूछते हो ना, किसको पूछते हो? आपके बाजू वाले को, या उसके बाजू वाले को, या तो सीनियर को. सो व्हाट इज दिस? दिस इज पीयर ट्यूटरिंग. ओके, इन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज जो आपका क्रेडिट स्ट्रक्चर होता है सर, उसमें बच्चों को पीयर ट्यूटरिंग कराने के भी क्रेडिट्स दिए जाते हैं कि आपने कितने बच्चों को ट्यूटरिंग किया है. तो बेस्ड ऑन दैट उस टीचर को, मतलब उस बच्चे को, उसके मार्कशीट में क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड ही कैन शो दैट एज हिज एक्सपीरियंस. सी बॉस, आई हैव गॉट अ एक्सपीरियंस ऑफ ट्यूटरिंग समथिंग टू समवन. Okay, so it is that thing which is important. Then to make things bit spicy, some universities have introduced courses called project based learning. Okay, I forgot the name of that university abroad. वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मान लो 100 बच्चे क्लास में हैं, तो दे विल मेक अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स ईच, और 10 बच्चों को 10 रूम्स में बिठाते, छोटी रूम होती जिसमें 10 ही लोग बैठ सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट दे देंगे. फिर वो बच्चे आपस में बैठ के वो सॉल्व करते रहते हैं, और टीचर जो है पूरा घूमते रहते वहां. एंड किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पूछेंगे, आप उस टीचर को कंसल्ट कर सकते हो. यू कैन आस्क द टीचर, बॉस आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम. एंड दैट इज अनदर वे पीपल हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दिस पॉसिबिलिटीज, बिकॉज अभी समवेयर आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग कि इसके आगे की जनरेशन्स में बच्चों को क्लास में बिठाना
in the collegiate is next to impossible. Okay, I'm sorry for that if teachers are sitting here, but ये होने वाला है. तो उसके लिए क्या तरीका है कि हमारे कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, हमारे यहाँ पे आपको फ्लिप क्लासरूम मिलेगा, हमारे यहाँ पे हम आपको क्रिटिकल से थिंकिंग से कुछ करवाएंगे. तो ये जो नए पैराडाइम्स है ये तो आने ही है. इसमें ईडी पजल करके एक टूल है, किसी ने देखा है ईडी पजल? इट्स अ गुड टूल. इसमें क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, भाई तुझे मुझे मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो मत देख, तो ये वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर. सो टीचर कैन गो थ्रू द वीडियो, और टीचर को जहां लगता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बच्चा ने फोकस करना है, वहां पे आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, वहां पे आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो. फिर वो आपके गूगल क्लासरूम में बच्चों को असाइन कर दो. फिर जो बच्चा वो वीडियो देखेगा, वो वीडियो उस पॉइंट पे गया कि वहां पे क्या होगा, तो क्वेश्चन आएगा यस टू आंसर, फिर वो आंसर करेगा. फिर पूरी क्लास का हो गया तो टीचर कैन सी ए एंटायर रिपोर्ट कि ये पॉइंट पे इतने बच्चे अटक गए, चलो ये सबको समझ में आ गया, कोई बात नहीं. फिर टीचर डिसाइड करेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है. ओके, दिस में बी टू फ्यूचरिस्टिक बट इट इज नॉट टू लेट ऑल्सो. ओके, बिकॉज वी नीड टू ट्राई. एक पर्टिकुलर यूनिट पे आप ट्राई करना चालू करो, एक यूनिट का वीडियो आप देख लो, आप खुद अच्छे वीडियो देखो. और वो ईडी पजल के वेबसाइट पे दूसरों ने बनाए हुए भी वीडियोज है जिसमें दूसरों ने सोच समझ के उसमें क्वेश्चन भी डाल के रखे हैं. पहले तो आप खुद ट्राई करो. ओके, सो दीज आर द पैराडाइम शिफ्ट्स. एज दिस थिंग्स वेर हैपनिंग, दिस वाज नॉट इनफ. ओके, फिर हमारे सामने चीज आई जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बिकॉज कंप्यूटर वालों को आगे रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ नया चीज बनाना पड़ता है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट वन ऑफ them. It actually started with a simple question by Alan Turing, can machines think? So there is a famous white paper in 1959. Okay, तो वहां से ये सारी कहानी शुरू हुई. फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, what is talking is all rubbish, it's not possible and all that. Okay, during 95 to 2000 when I was working in Pune, that time we had a professor from Canada University and he said, no, AI has become a bad word in Western world. But now it has become a reality to a greater extent. Okay? So e-commerce 2000 सबने बोला नहीं नहीं ये कुछ नहीं हो सकता है, and there is a bubble burst, that's what they say. So many people invested, सबका पैसा चला गया. फिर क्या हुआ, आज तो हो रहा है ना. So for any technology and revolution to come, it takes time. Sometimes we think too much ahead in time when implementing. Okay, so when those two things coincide, then there is no problem as such in getting success. So शुरू पे जब AI आया तो AI का मतलब क्या, किसे बोलते हैं हम, it is a set of technology that enable computers to perform variety of functions like what humans can do. One of it is to understand and translate languages, analyze data and make recommendations and much more. तो जो चीज हम कर सकते हैं वो कंप्यूटर से करवाओ, इस टाइप में प्रोग्राम. तो शुरू में क्या बात चली, वी विल डेवलप एक्सपर्ट सिस्टम्स. एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण हमेशा यही दिया जाता है, या विच वॉज रादर मोर सक्सेसफुल, कि जो होम्योपैथ डॉक्टर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते हैं, इट्स अ टिपिकल एक्सपर्ट सिस्टम. इफ यू हैव एवर विजिटेड अ होम्योपैथ डॉक्टर के पास कुछ लोग क्यों नहीं जाते, अरे फार बड़बड़ करता है, वो बहुत पूछता है तुम्हारे दादा को ऐसा हुआ था क्या, उनके परदादा को ऐसा हुआ था क्या, अरे यार मुझे देख तू, मुझे क्या हो रहा है. दैट इज आवर एटीट्यूड ऑफ लुकिंग एट इट. But he has a different attitude of looking at it because he's trying to treat you through your genetics hierarchy. Okay? तो वो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होती है ना, देर आर लाइक जैसे आजकल का चैटबॉट्स में होता है ना, देयर इज अ डायलॉग फ्लो कि आप मेरे वेबसाइट पे आए, मेरा इंश्योरेंस का वेबसाइट है, ओके, मेरे पास टर्म प्लान है,
तो टर्म प्लान में वो क्या क्या पूछ सकता है, पहले से उसका होमवर्क किया जाता है और उस तरह से डायलॉग फ्लो लिखे जाते हैं कि इसने ये पूछा तो हम क्या बोलेंगे, उसने वो पूछा तो क्या बोलेंगे, उसके आगे ये पूछा तो क्या बोलेंगे. सो इट इवॉल्व्स लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर. ओके, जो मशीन लर्निंग में आप पढ़ाते हो. और फिर वो देखता है इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना. उसी तरह से रूल्स लिखे जाते हैं एक्सपर्ट सिस्टम में. बट दिस वाज नॉट रियली इन फैंसी. वो ज्यादा चला नहीं, बिकॉज वी ट्राई टू सॉल्व ओवर एम्बिशियस प्रॉब्लम्स विथ एक्सपर्ट सिस्टम विच वाज नॉट पॉसिबल. ओके, बिकॉज एक्सपर्ट सिस्टम को ऑफ कोर्स यू नीड वन एक्सपर्ट. बिहाइंड एवरी एक्सपर्ट सिस्टम देयर इज वन एक्सपर्ट. ओके, and nowadays behind every expert there is some AI. See the paradigm shift. Okay, मैं भी ऐसा सब कुछ ऐसा ऊपर से लेके नहीं आया हूं ना, मैं भी तो 10 दिन से पढ़ रहा हूं यहाँ क्या बोलना है. तो ऑफ कोर्स आई हैव टेकन हेल्प ऑफ AI. व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ओके, हमारे यहाँ पे एक अभी वी हैड अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मिस्टर तनवीर खान. ही इज अ डेटा साइंटिस्ट कम AI इंजीनियर इन IBM. सो हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो लैब में नहीं आते, या वो लैब में आने के बाद दे ट्राई टू यूज AI टूल्स टू जनरेट कोड. करते हो कि नहीं? बोलेंगे नहीं वो. बट बार्ड करते हैं बहुत से लोग. विजुअल सोर्स कोड में ऑलरेडी देयर इज AI इंटरफेस. कोलैब में भी AI इंटरफेस है, आप सीधा प्रॉब्लम टाइप करो, प्रोग्राम जनरेट कर देगा. तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग वेदर इट इज इथिकल और नॉट एंड ऑल दैट. ओके, बट आई लाइक व्हाट ही सेड. ही सेड इन वन सेंटेंस. बोले सर देखो, मैं प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी हूं, मैं एक ही चीज पे बिलीव करता हूं, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल इट, नो रेगुलेट इट. इफ यू कैन नॉट कंट्रोल, यू रेगुलेट. ठीक है, तू लिख के ला, कोड जनरेट करा के लाओ, बट मैं तुमको पूछूंगा कि ये कैसे काम करता है. अल्टीमेटली गोल क्या है आपका, कि ये कैसे होता है. फिर व्हाई आर यू रनिंग आफ्टर दैट पुअर चैप कि वो खुद के मन से पूरा लॉजिक लिखेगा. इफ somebody has wrote a logic and you are trying to learn from that, what is wrong in that? But you regulate it. Okay, so ये अभी इस दौर पे हमारी शिक्षण व्यवस्था आ चुकी है कि आप इसको रोक तो नहीं सकते हो, बट उसको फिर हम अडॉप्ट करके उसको रेगुलेट करेंगे. बल्कि तुम बच्चों को इनकरेज करो कि भाई 2 प्रैक्टिकल तुम ऐसे करके लाओ, परीक्षा में भी हम तुमको पूछेंगे, तू कोड जनरेट कर, या तो मैं कोड जनरेट करके देता हूं, तुम बताओ. ओके, दैट्स अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स. सो एक्सपर्ट सिस्टम्स के बाद में फिर बीच में बहुत देर कुछ नहीं हुआ, बहुत टाइम कुछ नहीं हुआ. लोग बोल रहे भाई कर रहे, कुछ कर रहे, AI में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो हो रहा है. ओके, देन ऑल ऑफ सडन वी गॉट introduced to a new jargon or a new term called generative AI. Okay, so what is generative AI? I think the fellow speakers are going to talk on much detail, so I'll just paraphrase it in one sentence. So generative ability रखना. अब तक कंप्यूटर सिस्टम्स क्या करते थे? अंडरस्टैंड, एनालाइज, प्रोसेस एंड रिपोर्ट. But no generation actively by the computers. So generative AI tries to deal with this problem. You can generate a poem, you can generate a joke, you can generate a song, you can generate a music composition, you can generate a video and whatnot. Okay, that is the journey on which we have already started. Okay, so in generative AI we do lot of things, and who actually boosted the research in generative AI are the LLMs. Okay, so LLM क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है? सो दे आर लाइक बिग टेंसर्स और मैट्रिसेस, n dimensional. Okay, millions of parameters, billions of parameter. तो इन शॉर्ट उसमें क्या होता है?
बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा, वो मैट्रिक्स क्या बताता है? सो इट टेल्स यू अबाउट द एसोसिएशन बिटवीन टू वर्ड्स or two phrases or two paragraphs. Okay, so when we say we are learning with LLM or we are training the LLM, what are you trying to do is just to find associations. Okay, जैसे बच्चों को पता होता है that a particular teaches in a particular style. Okay, तो बच्चे पीछे बैठते हैं, अभी टीचर ओके बोलेगा 1 2 3, सो दे नो कि ये टीचर अभी इस शब्द के बाद कौन सा शब्द यूज करेंगे. सो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर सिमुलेटिंग योर न्यूरल लैंग्वेज मॉडल, मीन्स टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन. LLMs आर नॉट डूइंग एनीथिंग मोर देन दैट. LLM सिर्फ क्या करते हैं, आपने कोई पूछा कि भाई राइट ऐसे ऑन काउ, तो फिर वो काउ शब्द लेगा, फिर उससे एसोसिएटेड आगे पीछे के क्या शब्द है, इस तरह से वो आगे जनरेट करते चलता है स्क्रिप्ट को, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता. फिर अभी उसमें जैसे सर ने बोला कि AI कैन ऑल्सो डू मिस्टेक, इजंट इट? यदि इंसान गलती कर सकता है तो AI ने गलती करी तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया, इजंट इट? दाग तो चांद पे भी है, इजंट इट? सो ये LLM जो गलती करते हैं उसको सुधारने के लिए जो चीज होती है हम उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. सो व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट is that search query that you type in ChatGPT 4 या Gemini या Meta AI, जो ये करके दो, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं. तो आपने इंटरनेट पे खास करके स्टूडेंट्स ने देखा होगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर व्हा आणि 1 लाख रुपये महिना घरी बसल्या कमवा. देखा है यूट्यूब पे ऐड आते हैं ना, तो वो क्या है कि लोगों ने LLM बनाने के बाद वर्ल्ड नॉलेज को और सटीक तरीके से क्लासिफाई करने के लिए ये चीज करी है जिसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. ओके, बट आई टेल यू वन थिंग, ओनली राइटिंग गुड प्रॉम्प्ट्स विल नॉट अर्न यू 1 लाख रुपीज अ मंथ. यू नीड कोडिंग ऑल्सो. ओके, भले कोड आप उसी से जनरेट करवा लो, बट यू नीड दैट ऑल्सो. ओके, सो these are the tensors kind of things. So this is a neural network. तो ये किस तरह से काम करेगा कि आप इनपुट दोगे और उसको बोलोगे कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए, मैं ये कलर दे रहा हूं, ऐसा चित्र बनना चाहिए. फिर इन बिटवीन आपका दिमाग किस तरह से लर्न करता है. अरे हे चुकलं, जब कोई मूर्तिकार फर्स्ट टाइम मूर्ति बनेगा तो कुछ ना कुछ में गलती करेगा, फिर वो रियलाइज करेगा कि मैं कौन से पॉइंट पे गलत हो गया. And that is how you reverse back. So it's what is called as feed forward networks and back propagations. So nowadays we talk about 3 types of AIs: narrow AI, artificial general intelligence, and super artificial intelligence. Okay, तो नैरो क्या होता है ना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप पे आप चीजों को ट्रेन करा के कराते हो. तो अभी जो ईरा चल रहा है, वी आर राइट नाउ इनटू द नैरो AI. ओके, द नेक्स्ट वंस आर जनरल, जिसमें ड्राइवरलेस कार्स, या जैसे एक इंसान कर सकता है 4 चीजें, वैसी चीज कर पाना, उसको हम बोलेंगे जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अभी इसके लिए और 50 साल लग सकते हैं. सुपर इंटेलिजेंस, some people say it is not possible, some say it is possible, but it is going to take lot of time. एंड उसमें फिर क्या होता है ना कि वो बिलीफ सीखेगा, ही विल ट्राई टू हैव डिजायर्स. हाउ कैन अ मॉडल हैव डिजायर्स कि मुझे आज आइसक्रीम खानी है, बट वो बोलते हो सकता है. ओके, सोचना तो पड़ेगा ना हमको उसके लिए. सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स वी सेड. ओके, देन देयर इज अ बिग वॉर गोइंग ऑन राइट नाउ बिटवीन LLMs. ओके, सो देयर आर फेमस मेटा, जेमिनी, ChatGPT 4, GitHub, and recently China launched DeepSeek. ओके, तो ये इसका एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि कुछ लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि इसमें यदि
इसका आईक्यू टेस्ट लिया जाए, भाई इंसान कैसे करता है। सो वी बिलीव आइंस्टाइन सबसे होशियार आदमी थे हमारे ज़माने के, 160 आईक्यू। तो ये सारे जो एलएलएम्स है ये भी 155 160 तक पहुंच गए हैं अभी टुडे। ओके, so as they will see more and more data, they are going to get ahead of us. These are some of the tools आप सीधा देख सकते हो। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको इस पे रिसर्च करना है, हगिंग फेस करके एक वेबसाइट है, उस पे देर आर सो मेनी मॉडल्स, सो मेनी डेटा सेट्स एंड ऑल दैट। ओके, और ये मार्केट बढ़ ही रहा है एवरी डे। सो नाउ वेयर कैन एआई बी यूजफुल? ओके, these are last two slides. करिकुलम डिजाइनिंग। सो मैं ये मानता हूं अभी जो आप करिकुलम डिजाइन करते हो पूरी क्लास के लिए एक होता है, आगे चल के ऐसा नहीं होगा। बच्चे का पूरा प्रोफाइलिंग देख के एआई बताएगा कि इसको मशीन लर्निंग पढ़ानी है तो इसको क्या पढ़ाना है इसमें, क्योंकि उसको क्या आता है, उसके लिए जो नेसेसरी बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स का वो उसके पास होगा, तो ही वो बोलेगा इसको पढ़ाओ, नहीं तो बोलेगा इसको मत पढ़ाओ। ओके, और आगे के जो आपके कोर्सेस होंगे ये बीओएस बैठ के नहीं तय करेगी। व्हेन एआई विल लर्न द एंटायर वर्ल्ड, इट कैन फिगर आउट किस स्किल सेट्स की जरूरत आज से 10 साल के बाद होने वाली है, 5 साल के बाद होने वाली है, 3 साल के बाद होने वाली है, फिर वही बताएगा। एआई विल टेल यू व्हाट कोर्सेस वुड बी इन डिमांड, they will design the courses for you automatically because with the generative capacity. Then delivery mechanism, this is very interesting part. डिलीवरी मैकेनिज्म में हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो उसके अलावा, ओके, जैसे मैं बोल रहा हूं लेकिन कोई कविता पढ़नी, किसी को अमिताभ बच्चन की आवाज में सुननी है तो बोलूंगा तो मैं, बट वो आवाज आएगी बच्चे को अमिताभ बच्चन की। किसी को वही चीज गाने में सुननी है, तेरे नाम हमने किया सारा एआई ब्ला ब्ला। ओके, तो किसी को गाने के फॉर्म में सुननी है। यू नो, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जस्ट गो बैक टू द लैब एंड सी बबल शॉट, इंसर्शन शॉट, उसके ऊपर कुछ डांसेस है, कुछ किसने देखा कि नहीं मुझे पता नहीं, कि बबल शॉट सीखनी है तो वो ग्रुप ऑफ डांसर्स डांस करता है इस तरह से कि आपको समझ में आता है कि हाउ इट वर्क्स। तो ये सारा जैसे आपको डिलीवरी कंटेंट की चाहिए वैसे एआई के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो और बच्चा उसका फायदा ले सकता है। फिर पर्सनलाइज ट्रेनिंग, इसमें बच्चे के हिसाब से, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैसा उस चीज को पढ़ाया जाएगा। आई एम इनटू म्यूजिक, सो आई वुड लव इफ माय टीचर गिव्स एनालॉगस एग्जांपल्स इन म्यूजिक टर्मिनोलॉजी, जो कि शायद मेरे टीचर को नहीं आता, तो एआई उसमें बीच में आएगा, वो बोलेगा ये बंदे को म्यूजिक पसंद है, इसको कुकिंग पसंद है, इसको ये पसंद है, तो उस जॉनर के एग्जांपल्स आप उसको दो, दैट इट विल असिस्ट द टीचर्स, सो दैट मीनिंगफुल, आई मीन लर्निंग विल बिकम मोर मीनिंगफुल। एंड ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, तो अभी जो हमारा सिस्टम है वो टीचर क्वेश्चन पेपर निकालता है। ऑलरेडी वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज वर्कड ऑन अ प्रॉब्लम ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट। तो ये भी आगे होने वाला है। और आपके जो नंबरिंग ग्रेडिंग है ये कुछ नहीं रहेगा, उसमें वो बोलेगा ब्लूम्स लेवल 1 पे इसको इतने आए, ब्लूम्स लेवल 2 पे इतने आए, 3 पे आए। अभी हमारे मार्कशीट पे कोई ब्लूम लेवल निकालनी होता है। ओके, so some people are working on that kind of problem also. And lastly, the intelligent tutoring. Okay, so it will try to tailor the content to the taste of the learner. टीचर मैं ही रहूंगा बट उस बच्चे को उस स्टाइल में हो जाएगा कंटेंट, सो दैट आई विल फीड कि ये बच्चे को ये पसंद है, उसको इस स्टाइल में दो। एंड लास्टली द प्रेडिक्टिव एनालिसिस, सो इट विल टेल अस कि बच्चा किस एरिया में सही में अच्छा कर रहा है, किसमें गलत कर रहा है। आपका फोन, आपको पता नहीं होगा, बहुत बार आपके फोन का माइक्रोफोन जो होता है इट इज इन यूज, और आप कुछ चीजों की बातें करो घर में, मुझे अभी ये लेना है वो लेना, 2 दिन के बाद वो गूगल पे आपको ऐड दिखता है। इम्पर्सोनेशन, उस तरह से यू आर बीन वॉच्ड। जो भी आप इंटरनेट पे करते हो
तो उससे आपकी प्रोफाइलिंग बना के एजुकेशन से पर्टेनिंग जो इम्पोर्टेंट है वो लेगा और आपको और बेहतर तरीके से लर्न करवाएगा। अभी करना है नहीं करना आपके ऊपर, आप घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हो, आगे उसको क्या करना है वो उसकी बात है। Right? So Satya Nadella says so many, there is a lot of ethical debates going on. ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए. But I like what Satya Nadella said. AI can free us from tedious tasks, allowing us to focus on creativity and innovation. See boss, if somebody can create a PowerPoint for me readily, तो मेरा एक फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो जाता है ना। बड़े बड़े ऑफिसर्स को असिस्टेंट क्यों दिए जाते हैं? वो भी तो वही करते हैं ना। स्टेनो क्यों होता है? उस आपको थोड़ी टाइम है ना लेटर ड्राफ्ट करने का, वो स्टेनो को पता है लेटर ड्राफ्ट करना है। तो यदि वैसा आपको कोई एक्टिव असिस्टेंस मिल रहा है तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना, इट इज अप टू यू, सो दैट यू कैन बी मोर क्रिएटिव। ओके, इट गिव्स मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ लर्निंग इज टू provide a experiential learning, and that AI will definitely make it possible to use. So can AI replace you? No, but a person knowing AI will definitely replace you. That's the last proposition. Thank you. So questions? Don't look at the floors. Yes, please. बोलो बोलो। Hello. Sir, as you stated before, the generative AI uh, is generating the videos of bubble sorts, human beings doing the things they can't. So, sir, there is also a concern of, sir, fake videos being, or the concern of identity theft. How can we tackle that? There would be a separate team of people who will do PhD on that. See, atomic power was not meant to make blast in Japan, right? So for every, some people say it's a double-edged sword. Okay, so if there are good guys, there are going to be bad guys also. But there would be separate mechanisms. Now deepfake is already there, you must have heard. Okay, तो अभी उसके ऊपर भी काम करेंगे ना, बट कोई बैड बॉयज आएंगे करके हम कुछ करेंगे ही नहीं, ये चीज गलत होती है। ओके, तो इसलिए डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो सकता है, बट एटलीस्ट एजुकेशन के डोमेन में ऐसा नहीं होगा। देखो, आदमी फ्रॉड कहा करता है ना जहां पे पैसे मिलते हैं। आपको गलत पढ़ा के क्या पैसे मिलने किसी को? इजंट इट? यदि आप पैसे देके पढ़ रहे हो तो वो पैसे दे ही रहे हो ना उसको, वो आपको गलत क्यों पढ़ाएगा? सो टुडेज टॉक वाज ओनली कन्फाइंड टू द एजुकेशन डोमेन. देयर आर अदर डोमेन्स आल्सो इन रियल लाइफ. Okay, but some people will definitely be working on that. Already people are working on that topic, that how can you do this, how can you stop this thing from getting done. Okay, so I hope I have answered your question. Huh. Sir, just a general question, like, will AI affect the employment someday? See, मैं एक बात बताऊं आपको. Since independence 40,000 types of jobs have been lost. जब से भारत देश को स्वतंत्रता मिली है 40,000 टाइप की नौकरियां, टाइप्स आई एम टॉकिंग है, नॉट द नंबर ऑफ जॉब्स. ओके, जैसे आपको पता है जब हमारे बचपन में वो पेंटर्स हुआ करते थे, दुकान की वो प्लेट बनाते थे ना नाम की, अभी वो नहीं रहे. वो नहीं रहे इसका मतलब वो प्रोफेशन खत्म हो गया क्या? तो 40,000 जाएंगे तो 50,000 नए भी आएंगे. बट you should be ready for that. You should be ready for that. No,
यदि वो पेंटर बोलता है मुझे कंप्यूटर ही नहीं सीखना है, तो भाई तू बैठ जा घर में. पहिले टांगे वाले होते, मग रिक्षा आली, मग आता उबर आलं, मग रॅपिडो आलं. कधी काही लोकांनी रिक्षाला दगड मारलं तर रिक्षावाले रॅपिडोला दगड मारतात. तो ये तो चलता रहेगा. बट न्यू टाइप्स ऑफ डेफिनेटली जॉब्स आर गोइंग टू कम इन द वर्ल्ड, एंड ओनली थिंग इज यू हैव टू टैप दैट पोटेंशियल राइट नाउ, कि आज से 5 साल के बाद तुमको किस टाइप के जॉब्स लगेंगे, उस टाइप की मैन पावर अभी करो. प्रॉब्लम विथ अस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अभी जो ट्रेंडिंग है ना, हम उसी पे अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं. बाय द टाइम दो स्टूडेंट्स कम आउट, दैट थिंग हैज ऑलरेडी लॉस्ट इट्स ग्लोरी. ओके, इसलिए ओनली की इज यू हैव टू बी ऑन योर टोस एंड डू द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर. डेफिनेटली बहुत सारे नए टाइप के जॉब आएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड प्रॉम्प्ट राइटिंग? आपने किसी ने टाइप करके देखा है? डेले 2 करके टेक्स्ट टू इमेज मॉडल है, वो जो मैंने बोला ना आपको हगिंग फेस, उस पर बहुत सारे मॉडल्स है. उसके बाद में फ्यूचर पेडिया करके एक वेबसाइट है, उसमें भी आपको बहुत सारे एआई के टूल्स मिल जाएंगे टू एक्सपेरिमेंट. ओके, जस्ट ट्राई टू टाइप इलॉन मस्क टेकिंग बाथ एट महाकुंभ, वो जनरेट करके देगा इमेज. तो ये आपके ऊपर है ना, आप ट्राई करके देखो वो क्या दे रहा है. वो यदि गलत दे रहा है ना, वो यदि किसी हडसन रिवर में एलन मस्क नहा रहा है ऐसा बताएगा, आप बोलोगे ये तो बकवास है, तो वो सुधार लेगा. ओके ओके, आउटसोर्सिंग के बाद एक नया टर्मिनोलॉजी आया है, उसको बोलते हैं क्राउड सोर्सिंग. उसको क्या बोलते हैं? क्राउड सोर्सिंग. आपको क्या लगता है वो जो कैप्चा पूछता है आपको कंप्यूटर, वो क्यों होता है? द फंडामेंटल ऑफ आइडिया बिहाइंड द कैप्चा वॉज कि भाई कोई प्रोग्राम लिख के सारे रेलवे के रिजर्वेशन बुक ना करा दे, इसलिए वो कैप्चा आया. सो व्हाट वाज कैप्चा इन 10 years ago? आई टेल यू. अमेजॉन का आपका नाम पता है? तो अमेजॉन क्या करते, बुक बेचणे वाला एक कंपनी था, जैसा प्रशांत बुक डेपो जळगाव मध्ये कदाचित, असं अमेरिकेत कोपऱ्यात असेल कुठे. तो उन्होंने क्या किया, दुनिया भर के बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो कि खराब हो चुके हैं, जिसको दीमक लग गई या उसका कलर उड़ गया, पानी गिर गया, वॉट एवर, तो वो थोड़ा सा अभी डाइसी लग रहा है पढ़ने के बाद, ये द दिख रहा है कि ई दिख रहा है कि एच दिख रहा है. तो उन्होंने क्या किया कि वो जो किताबें थी उनको ऐसे 3-3 लेटर 4-4 लेटर्स में उसकी इमेजेस बनाई और वो कैप्चा बोल के टिका दिया. फिर क्या हुआ, वही कैप्चा 1000 लोगों ने देखा, एवरीबडी ट्राई टू एंटर समथिंग और दी अदर. जो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये 9 दिख रहा है कि 8 दिख रहा है, अभी 1000 में से 900 लोग बोल रहे कि ये 9 दिख रहा है, तो उसने मान लिया. एंड दैट इज हाउ एवरी ईयर they could digitize and create 200 books. आपको पता लगे बिना आपका दिमाग इस्तेमाल कर लिया. ओके, दैट वाज आइडिया. ओके, आई होप I made sense to you. Okay, it was a bit fast, but of course there are समय की सीमा है. Yes, last question. Otherwise, you can meet me anytime in the university or anywhere. Hello, sir. Yes, please. So my question is AI really ethical? और मतलब फ्यूचर में वो एथिकल रहेगा या फिर सिर्फ एथिकल रहने से फायदा होगा या नहीं होगा एआई को? मैंने क्या बोला, कैन यू कंट्रोल इट? सो उसको रेगुलेट इस तरह से करो कि उसके एथिकल यूजेस ही हो. इजंट इट? हम क्या बोलते हैं, कॉपी करना मना है. पहले हमारे जमाने में तो भी लोग कम से कम हाथ से कॉपी लिखते थे, हाताने कॉप्या लिहायचे. आता तेवढे कष्ट घेत नाही कोणी. पुस्तकाच्या पुस्तक झेरॉक्स, नुसतं झेरॉक्स नाही, ते मिनी झेरॉक्स, माइक्रो झेरॉक्स, सॉरी. ये तो होते रहेगा, बट ऑफकोर्स देर आर मोर नंबर ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड, दैट इज वाई द वर्ल्ड इज रनिंग. तो एथिकल इश्यूज तो इंपोज हो गया ना, इसलिए क्लोनिंग का रिसर्च रुक गया. क्लोनिंग का रिसर्च क्यों रोक दिया गया?
आता है तो उसका डीएनए सिग्नेचर मेरा सिग्नेचर सेम रहेगा, उसका ब्लड ग्रुप मेरा ग्रुप सेम रहेगा, वो किसी का मर्डर हो गया तो कौन बताएगा ये इसने मारा इसने मारा, isn't it? तो कुछ जगह पे एथिकल इश्यूज आएंगे, जैसे म्यूजिकल कंपोजिशंस है। ओके, लास्ट थिंग आई टेल यू, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ विथ एआई कि कैन यू मेक अ म्यूजिक विच इज द मोस्ट बोरिंग म्यूजिक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे खराब म्यूजिक जो बिल्कुल आप 1 मिनट से भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो 1 घंटे का म्यूजिक बनाया एआई ने। और जो टॉप नॉच जो कंपोजर्स है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जैसे यान्नी है, ओके, बहुत सारे हैं, उनको सुनाया तो उन्होंने समझा अरे इससे गंदा म्यूजिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूजिक में क्या होता है ना, प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। अब ये सुर सुनने के बाद अगला सुर आपको अच्छा ही लगेगा तो ये चलेगा, तो उसको ये ढूंढना था कि इसके बाद क्या सुनाना है कि जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो इस तरह से भी लोग लर्निंग कर सकते ना। सो एथिकल इश्यूज तो आने ही वाले और रहने ही वाला है। तो एलोपैथी आई तब भी एथिकल इश्यूज थे कि इसके साइड इफेक्ट्स है, बट फिर भी आज है, isn't it? Okay, I hope I answered your question. Thank you. Thank you, sir. I thank the college for giving me this opportunity to come and interact with you guys. Thank you very much. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. It is a great honor for me to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of H Raisoni College of Engineering and Management, Jalgaon, to Professor Ram Bhausar sir for an enlightening and engaging session on future of education in the AI era. We truly time, effort, and the expertise you have shared with us today. Your insights into the learning process, transformation of the education system, AI impacts on the education have provided us with a deeper understanding and the valuable takeaways. Sir, we feel very honored and encouraged by your valuable guidance and presence today in our campus. I am honored to have an opportunity to thank Honorable Chairman Sunilji Raisoni for his continuous support and inspiration. I am thankful to Honorable Shreyasji Raisoni, Executive Director, for his guidance. I am also thankful to Dr. Preeti Agrawal, Director, for her stewardship, support, and vision. My heartfelt thanks to Dr. Sanjay Shekhawat, Dean Academics, for his strong guidance. I am also thankful to HOD of CSE-IT, Dr. Sonal Patil, and all the teaching and non-teaching staff and students for making the event successful. Thank you everyone. Our next session, our next session would be at 1:30 in online mode. Those